Hello students, this is the one of the very important MCQ series of plus 2 classes chemistry special for September examination, in which the number of chapter are 6. So इस ਜਿਹੜੀ September examination है total जिस तरह 28 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MCQ ਜਾਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ MCQ ਬੇਸਡ ਵੀ ਇੱਕ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 MCQ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ D ਐਂਡ F ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ MCQ ਬੇਸਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਰ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀक्यूल that store genetic information and enable the protein production. Nucleic acid include DNA and RNA, and these molecules are composed of long-stranded nucleotides, and nucleotides are composed of nitrogenous base, 5 carbon sugar and phosphate. So nucleic acid ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਈਡ ਹੈ ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫੋਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ DNA। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DNA ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੇਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਫੋਸਫੇਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਆਰ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈਗੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੀ ਦੈਟ ਆਰ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ ਥਰੂ ਏ ਫੋਸਫੋਡਾਈਐਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਏਗੀ ਬਿਟਵੀਨ 5 ਐਂਡ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਊ ਆਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਈਚ, so all the nitrogenous base are joined with each other through the hydrogen bonding. ठीक है। next question है which nuclei carry out the protein synthesis in the cell। जिस तरह first that is the nucleic acid that store the genetic information and enable to the protein production। ਜਿਹੜੇ nucleic acid है protein production ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है जी। now next आ ਜਾਂਦਾ next question that is a MCQ based first question, and the EMF of a cell is positive। if EMF is positive है then free energy change of a reaction, then delta G, as we know delta G ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ NFE ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ E ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ G ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਥਰਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਫੋਰਥ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਡੈਲਟਾ G ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਐਟ ਦਾ ਕੈਥੋਡ ਆਫ ਏ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਅਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਰੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਟ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ that is a option C, that is a oxygen at cathode. Next question is on addition non volatile solute the vapor pressure solution. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, on addition of non volatile solute, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ, ਅਗਰ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਪਰ। ਅਗਰ ਵੇਪਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਚੇਂਜ, ਥਰਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ and fourth none of these. The correct answer is decrease, C option. ठीक है, next that is a glucose solution is to be injected into the blood serum, it have the same fill in the blank as of the blood serum. First option that is a molarity, second osmotic pressure, third vapor pressure or viscosity. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੀਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ। ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਫੈਕਟਰ ਆਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ठीक है, मे बी इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1 और आई लेस देन 1। ठीक है, अगर लेस देन 1 दैट इज ए एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 दैट इज ए डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन दैट इज ए आई इक्वल टू 1 हो जाएगा वाटर फैक्टर। सो इतने जी कंडीशन है फॉर एसोसिएशन ऑफ ए सॉल्वेंट ने पूछी हुई है, एसोसिएशन के लिए है दैट इज ए लेस देन 1। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाले मेजर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, initial concentration of reactant is double, the half life period of a zero order reaction is affect की होएगा half life order reaction पे। as we know in the half life order that is directly proportional to the molar concentration of A 1 minus n। ठीक है, if ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਸਿੰਬਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇਜ਼ डबल फॉर जीरो डायरेक्शन, एन जीरो है इट मीनस टी हाफ के प्रोपोर्शनल होगी, जीरो 1 माइनस जीरो ए दे होएगा इनिशियल कंसनट्रेशन दे। सो इफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर इतने आप डबल कर देवांगे इनिशियल कंसनट्रेशन एंड उस टाइम पर कहता की है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकम की हो जाएगा, वो डबल हो रहा है इतने दिखाई दे रहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी दैट इज ए डबल। ठीक है, नेक्स्ट है when the initial the role of catalyst is to change first activation energy, second equilibrium constant, third Gibbs energy and fourth enthalpy of a reaction। so role of catalyst ਦਾ ਕੀ ਹੈ, catalyst always ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, rate of reaction ਨੂੰ fast ਕਰਦੀ ਹੈ with decrease in the activation energy, मतलब activation energy ਨੂੰ change करती है। so first option है that is activation energy is the correct answer। ठीक है, activation energy ਨੂੰ change करती है and product formation very fast करती है। ठीक है, the rate at which the substance react depend upon the first atomic mass, second equivalent mass, third molecular mass, last option that is the active mass and correct answer is the active mass। ठीक है, next write the unit of zero order reaction। ठीक है, zero order reaction अगर किसी भी आप ऑर्डर निकालने हैं तो आप जनरल एक टर्म जनरल एक रिएक्शन याद रखने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਰਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ concentration that is a mole per liter power 1 minus n and second inverse, this is a general formula। ठीक है, put the value n put करेंगे 0 that will give the zero order rate constant यूनिट आ जाएंगे, अगर n वैल्यू 1 होगी that will give the फर्स्ट order यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, अगर n वैल्यू 2 पुट करांगे तो सैकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट के मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह आप नैक्सट कर लाँगे, तो इतने जीरो ऑर्डर के अगर पूछे हुए तो जीरो वैल्यू पुट करांगे, सो यदा आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर एंड सैकेंड इनवर्स। ठीक है, आ साढ़े को आंसर आ जाएगा द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, दिस इज जनरल क्वेश्चन, इस चीज़ में नोट करना प्लीज़ सारे।
नेक्स्ट की है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड की गल करते हैं ਜਾਂ हेक्साडेंटेट है डाईइन है CN नेगेटिव है इन है इथाइलिन डायमीन है तो EDTA ये हैक्साडेंटेट EDTA की अगर फुल फॉर्म देखा जाए इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन अगर देखा जाए तो ये की है इथाइलिन CH2 N N 2 CH2 COO negative and CH2 COO negative and similarly CH2 COO negative सिमिलरली इत्थे CH2 COO नेगेटिव ये साडे को फॉर्मूला हैगा EDTA थाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट आयन ठीक है। हुण इहदे विच देखते हैं कि डोनर एटम किन्ने साडे को शो हुंदे पे है ध्यान नाल देखो स्ट्रक्चर दे विच तां आपां देखदे हैं एक नाइट्रोजन है डोनर एटम इत्थे दूजा नाइट्रोजन है इधर भी एसीटेट आयन दा लास्ट ऑक्सीजन इधर भी एसीटेट आयन दा लास्ट ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी टोटल देखा जाए 2 तो 2 4 तो 2 6 टोटल 6 डोनर एटम है एंड हैंस दिस इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड है ठीक है ये वाला हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डाइमीन जिहड़ा हैगा CH2NS2 CH2NS2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਈਟ੍रोजन फ्री ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਜਾਂ ਡਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗेंड ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है। सो इस तरह ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ फाइंड करनी है तो याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है आ वाले MCQ जोड़े बार बार इन्होंने चैप्टर के पूछे जाते हैं ठीक है जी। सो नैक्सट इज द कोआर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO इन 3 पॉजिटिव दैट इज ए न्यूट्रल लिगेंड। सो इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ X कोबाल्ट प्लस 0 इक्वल टू 3 पॉजिटिव प्लस 3 सो X की वैल्यू आ जाएगी +3 कोआर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दैट इज ए K2 निकल साइनाइड है। सो पहले इहदा ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे निकल X 2 + X - 4 बिकम इक्वल टू 0 एंड X विल इक्वल टू 2 ठीक है। X की वैल्यू 2 आ जाएगी तो इहदा नाम की आ जाएगा पोटाशियम ये वाला एक तरह नैगेटिव चार्ज लिगेंड साडे को बनता पाया टेट्रा सियानो निकलेट निकलेट तो 2 वही ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी ये IUPAC नेम हो जाएगा ठीक है जी। इस चीज़ में चंगी तरह याद रखना। नैक्सट की है मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ आयरन F63 नेगेटिव। सो सब तो पहले सानू आयरन की ऑक्सीजन स्टेट तो वो सानू पता होना चाहिए तो उस केस के असी गल करते हैं सब तो पहले आयरन जिहदा की है 3D6 4s2 ठीक है जी। ये वाला साडे कोल है आयरन तो जो ये देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट की X मन के इनू सोल्व करते हैं कैलकुलेट करते हैं X -6 इक्वल टू -3 6 उधर जाके प्लस दे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। आयरन 3 पॉजिटिव इन केस ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव 2 इलैक्ट्रॉन एस दे विचों आउट हो जाएंगे एक D5 तो D6 के विचों टोटल ले जाएंगे D5 है 5 अनपेड इलैक्ट्रॉन है साडे कोल ठीक है 1 2 3 4 5 है N वैल्यू 5 आ गई तो मैगनैटिक मूवमेंट का फॉर्मूला की होंदा √N × N + 2 तो इत्थे 5 × 5 + 2 करांगे आपां तो BM तो ये साडे को आ जाएगा √35 BM अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ठीक है। सो ये सी मैगनैटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का मैथड तो ये चंगी तरह याद रखना तो समझ लेना इस चीज़ को ठीक है जी। नैक्सट साडे कोल द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन एज अमोनिया इज अगेन ए 0 न्यूट्रल लिगेंड। सो प्लैटिनम X +5 × 0 + -1 एंड -3 बिकम इक्वल टू 0 ठीक है। सो टोटल साडे कोल आ जाएगा माइनस प्लस एंड दैट इज ए 4 + 4 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी प्लैटिनम की ठीक है जी। नैक्सट है द वाटर फैक्टर ऑफ KCl एंड सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम सल्फेट इज। सो वाटर फैक्टर डिपेंड करता है आयन पे इन केस ऑफ KCl दैट विल गिव K पॉजिटिव + Cl नेगेटिव आयन दैट इज ए 2 आयन
In case of NaCl, again there is a formation of two ions, Na positive and Cl negative ion. And in case of potassium sulfate, there is a formation of 2K positive plus sulfate SO4 2 negative ion. It means here is I value that is a 3 आ रही है, ठीक है। पहले दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ I 2 आ रही ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3 आ रही है, 2 2 3 आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज आंसर बी इज, ठीक है। नेक्स्ट है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट वट टैंपरेचर विल द, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੇ ਬੀ ਇੰਟੂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਓਵਰ ਐਮ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲ 1000 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ weight of solvent, weight of solvent 1 kg that is 1000 gram, weight of solute that is 18 gram, mb that is molecular mass 180 gram per mole, and kb value is given. Put the all the value and get will answer delta tb here, ठीक है। डेल्टा टी वी मिल गया, बट सानू पूछा कि होया टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा होया, तो वो लिए कैलकुलेट करने दे साढ़े को रिलेशनशिप है डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। सो वाटर बॉयल करेगा दैट इज़ ए 373.15 कैलविन है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ कि एक फिक्स वैल्यू हैगी है। तो ये वाली वैल्यू इस रिलेशनशिप के पुट करांगे तो टी बी कैलकुलेट करांगे तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन साढ़े को आ जाएगा 373.202 कैलविन इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है। ये साढ़े को करैक्ट आंसर आ जाएगा। सो इस तरह आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर पावेंगे। नैक्सट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट पेज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिपोजिट एट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन सब तो पहले की है आप आयनिक फॉर्मेशन सोचा करनी है कि होया करेगी, जिस तरह Ag पॉजिटिव है प्लस NO3 1 नेगेटिव है, एज Ag पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, इट मीनस एक इलैक्ट्रॉन चेंज करता पाया। सो ये क्या हो इक्वल टू की हो जाता NF, N की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 1 है तो 1F आंसर आ जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है दैट इज 1F इज द करैक्ट आंसर, ठीक है। ये सी साढ़े कुछ क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन आप करते हैं, वट आर दी राइट दी यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते आप यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कॉन्सटेंट का फॉर्मूला तुहानूं दस्सिया सी उन्हें मोल पर लीटर, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप, ठीक है। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन एंड सैकेंड इनवर्स, ठीक है। ये वाली गल करते हैं, ये एन वैल्यू जिन्नी भी होएगी पुट कर लवांगे तो सानू इत्थे ऑर्डर जिहड़े यूनिट है वो मिल जाया करनगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सैकेंड एंड थर्ड ऑर्डर किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के मिल जाया करनगे, ठीक है। सो ये आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर सैकेंड इनवर्स एज पुट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 0। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ऑलरेडी आप डिस्कस किया EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ऑलरेडी आ वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन इज E नोट chromium 3 positive to chromium that is 0.72 volt, and E नोट आयरन दी हुई द पोटेंशियल ऑफ फॉर ए सैल रिएक्शन सानू गिवन है, तो यह सॉल्व करने को गया हुआ सानू इत्थे। सो ये देखते हैं आप कि फर्स्ट की वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमियम तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, तो आयरन टू आयरन है एंड ऑल द वैल्यू आर गिवन। सो फर्स्ट एट एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन राइट करनी है, तो एट कैथोड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन राइट करांगे आप। जो राइट करते हैं तो देखते हैं 3 इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं। टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3 वी गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। सो इन केस ऑफ ओवरऑल सेल रिएक्शन when we write the Nernst equation, E cell become equal to E naught cell minus 0.059 over n log concentration of product over reactant, ठीक है। अगर इतने प्लस साइन लिख देता ये मतलब कंसनट्रेशन ऊपर रिएक्टेंट की हो जाएगी, नीचे प्रोडक्ट की हो जाएगी, ठीक है। सो ये सब तो पहले सानू E नोट सेल भी चाहिए। E नोट सेल बिकम इक्वल टू फॉर्मूला E कैथोड माइनस एनोड, पुट द वैल्यू है एंड कैलकुलेट वी विल गेट द 0.30 वोल्ट। सो साढ़े को E नोट सेल भी मिल गई है, एन वैल्यू भी सानू पता चल गई, टोटल कितने 6 इलैक्ट्रॉन हो रहे हैं। सो ये कंसनट्रेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव एंड ऑलरेडी गिवन है साढ़े को, क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी गिवन है। सो पुट करांगे सारी वैल्यू नू तो इस तरह लॉग कैलकुलेट करांगे साढ़े को, तो साढ़े को आंसर आ जाएगा 0.2607 वोल्ट इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट तुहानू एक लॉग
ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज ए क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स with salt wedge keeps the electrolytes in the two half cell reaction electrical neutral. This is one of the true statement. Second one, reduction takes place at a node in electrolytic cell. That is also a true statement. Next, rusting of iron is slower in saline water than in ordinary water. This is a false statement. As we know, in case of saline water there is a maximum number of salty ions, so due to that rusting of iron become faster. Okay. Next, geometrical isomer is not possible for tetrahedral geometry. That is also a true statement. Cn negative is a stronger field ligand. This is a wrong statement. ठीक है, this is a false statement. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਸੀਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ known as we know, in case this is a basic definition of law. Partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction. This is for any component. For example, A component, it will equal to PA become equal to PA naught XA. This is the statement, and this is the statement of Rolle's law. ठीक है, and first that is a Henry law, second is a Rolle's law. This is the correct statement Rolle's law. ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ दैट इज ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ਸਾਡੇ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सो करैक्ट आंसर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ है, पाई दैट इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोट करता, डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, delta TF that is a depression freezing point, and TB that is a formation that is a formula for solution boiling point है, but ये साढ़े कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इस करके D is the correct answer. Next, which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? As we already discussed in MCQ series, boiling point उसका ज़्यादा होएगा जिन विच ये number of ions की formation ज़्यादा होएगी। ठीक है, in case of NaOH that is a Na positive प्लस OH नेगेटिव आयन, दो आयन साढ़े को बनते हुए हैं। यूरिया देयर इज नो आयन्स, ओनली वन आयन। ठीक है, एंड इन ग्लूकोज ऑल्सो वन। ठीक है, इन केस ऑफ MgCl2 देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। टोटल फॉर्मेशन कितने हो रही है, 3 आयन की फॉर्मेशन हो रही है। सो ये ज़्यादा जिन्नी आई वैल्यू ज़्यादा होगी उन्ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सो करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ ए इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू द। सो ये बड़े ध्यान दे नाल करना, इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का न्यूमेरिकल है कि कंडक्टिविटी है इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इज ड्यू टू द फर्स्ट फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सेकंड है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस, थर्ड बी ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ आयंस एंड कैन नॉट बी सेड, एंड करेक्ट आंसर दैट इज ए मूवमेंट ऑफ आयंस इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आप गल करते हैं इन केस ऑफ फ्यूल सेल अगेन, विच ऑफ द following can be utilized as a fuel? First that is a nitrogen, second argon, third hydrogen, and fourth one that is a helium. As we know, in case of a fuel cell, hydrogen oxygen is called as a fuel cell. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करांगे ਆਪਾਂ hydrogen gas। ठीक है, and correct answer is C option. Next question है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, the molarity of a solution containing 7.1 gram of sodium sulfate in 100 ml of aqueous solution is। सो इत्थे कैलकुलेट करांगे आप मोलैरिटी नू। सो एज वी नो मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला दैट इज NB ओवर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज WB ओवर MB मल्टीपल बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पुट द वैल्यू WB दैट इज 7.1, एंड इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट मोलर मास दैट इज 142 है, 7.1, एंड वॉल्यूम साढ़े को 100 ml। तो जो सारी वैल्यू पुट करांगे तो सोल्व करांगे दैट विल गिव द आंसर 0.5 मोलर। सो करेक्ट आंसर दैट इज ए 0.5, दैट इज ए B ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
Next, what is the mole fraction of ethylene glycol in the solution containing 20 gram by mass? So mole fraction calculate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ethylene glycol ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ weight of glycol that is 20 given and the number of moles of glycol that is 20 by 62. Similarly water 80 and number of moles can be calculated 80 by 18 and ethylene glycol करेंगे ਆਪਾਂ number of moles of one component divided by total number of moles we will get the value that is 0.0677 is the correct answer। ठीक है जी, ये वाला साढ़े को ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, and C option is the correct answer। Next, if the limiting molar conductivity of calcium 2 positive ion and Cl negative ion, and in case of limiting molar conductivity of calcium chloride, that can be written as lambda naught calcium 2 positive ion plus twice the conductivity of Cl negative ion। सो ये वाली आप अगर टोटल कैलकुलेट करांगे तो साढ़े को आ जाएगी 119 प्लस ट्वाइस मल्टीपल बाई 76.3 तो टोटल साढ़े को बन जाएगी दैट इज़ 271.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी मोलर कंडक्टिविटी आयन की दी हुई है तो कोलश ला के अकॉर्डिंग की सीगा कि टोटल कंडक्टिविटी विल बी द सम ऑफ द टोटल आयन्स। ठीक है जी, दैट इज़ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन कंडक्टिविटी प्लस कंडक्टिविटी ऑफ ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव आयन जोड़े बनते पे। ठीक है, यही आप फॉर्मूला इतने यूज़ किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्ट इज ए मिक्सिंग ऑफ दैट इज रस्ट जो मिक्सिंग होएगा वो Fe2O3 प्लस FeOH थ्राइस। ठीक है, इन दोनों का मिक्सर जो होएगा दैट इज ए रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आयरन ऑक्साइड है तो आयरन ट्राईहाइड्रोक्साइड है, सेकेंड एंड थर्ड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, Fe2O3 and FeOH thrice is the correct answer। Next, the IUPAC name of platinum NH3 thrice Br नाइट्रो Cl and Cl। ठीक है, जो भी IUPAC नेम लिखना कोआर्डिनेशन कंपाउंड का सब तो पहले कोशिश करना था कोआर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो फाइंड आउट करना बाई टेकिंग द x वैल्यू ऑफ प्लेटिनम कैलकुलेट प्लस अमोनिया दैट इज अ जीरो वेलेंट न्यूट्रल लिगेंड प्लस Br -1 nitro -1 Cl -1 and again Cl -1 become equal to 0 and it will give 1 2 3 and 4 -4 equal to +4। इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। +4 देखे जाए तो सारे दे विच 4 है। सो जो राइट करते हैं नाम सब तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर के नाल नाम लिखांगे आप। अमाइन ए पहले आ रहा है ट्राई अमाइन, फिर बी तो ब्रोमाइडो है, सी तो क्लोराइडो है, नैक्सट नाइट्रो है एंड प्लैटिनम है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि साढ़े को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन दैट इज़ ए ट्राई अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट दैट इज़ ए मोहर साल्ट। एज वी नो द मोहर साल्ट फॉर्मूला दैट इज़ ए Fe2SO4 twice ammonia twice and sulfate 6 water molecule। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ I will write the here Mohr salt formula that is the Fe2 ferrous ammonium sulfate already ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ठीक है जी, NH4 twice sulfate and 6 water molecule। this is the molecular formula of Mohr salt। ठीक है, ferrous ammonium sulfate already। नेक्स्ट की है साढ़े को नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रिएक्शन रेट वाई।
कैटलिस्ट है इंक्रीज कर दिया जाए डिक्रीज कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है डिक्रीजिंग एंथैल्पी है, सेकंड इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी है, थर्ड दैट इज डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एंथैल्पी है, फोर्थ है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एंथैल्पी। एंड करेक्ट ऑप्शन है साढ़े कोल सी, दैट इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ए कैटलिस्ट। So next question, and the rate constant is independent of initial concentration of a reactant for a reaction of rate constant ਤੇ ਆਪਾਂ already ਕੀਤਾ ਹੈ concentration power 1 minus n and second inverse, it which rate constant is independent of initial concentration. If we put the value of n equal to 1, then concentration power 0 and k will become equal to second inverse. It means initial concentration the dependent नहीं है, it so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ correct statement होएगी that is for the first order reaction, ठीक है जी। so next करांगे ਆਪਾਂ for a reaction the rate law is given by r equal to a k a the power 1 over 2 plus and b the power 2 order. As we know in the order definition of order, that is it is defined as the sum of power, so sum of power to raise term plus 2, it will give the 1 plus 4 divided by 2, that is a 5 by 2. So correct answer, that is a D option is 5 by 2 is the correct answer. So next is the complex ions CuNH3 5NO2 2 positive and CuNH3 thrice 5 times ONO, that is 2 positive। अगर देखिए दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ NO2 ਤੇ ONO that is a ligand ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਆ ਰਹੀ ਹੈ। so these type of ligand that is show the linkage of ligand to the metal atom become different atom, so this is also called as a linkage isomer type, ठीक है जी, नाइट्रो और नाइट्राइट आयन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन केस ऑफ निकल, दैट इज ए एक्स एंड कार्बन, दिस इज ए CO, ठीक है, दैट इज ए कार्बोनाइल है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिकम इक्वल टू 0, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया सीगा EDTA है, ऑक्सलेट आयन है, ईन है, अमोनीया है। ऑक्सलेट आयन अगर देखिए तो साढ़े कोल की है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दिस इज ए बाइओडाइडेंटेट लिगेंड। इन इथाइलिन डाइमिन इट इज ऑल्सो ए डाइडेंटेट लिगेंड। अमोनिया इज ए सिंगल मोनोडेंटेट लिगेंड, सो EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, हैविंग 6 डोनर एटम। Next, the rate of reaction is primarily determined by slowest step, and this step is also called as the first rate determining step, second activation step, third reaction rate step. Next, none of these, and correct option that is a rate determining step is known as the slowest step, ठीक है जी। Next, true false, molar conductivity increase upon dilution whereas conductivity decreases, this is a true statement। Second, for a spontaneous reaction EMF must be negative, spontaneous reaction ਦੇ ਲਈ EMF is negative, so this is also a true statement। Next, in a dry cell zinc is anode and graphite is cathode, this is also a true statement। Next, oxidation state of iron in, this is a formula, oxidation of state of iron in, that is a +3, this can be calculated 4 plus x 6 into cyanide negative ligand minus 6, 4 plus x minus 6 become equal to 0 and x will become equal to 2 value, so there is 3, this is a false statement, ठीक है। next, ambient ligand can be unidentate ligand at a one time, ambient ligand can be attract give show donation property through one side, so this is again a true statement। but if the reverse is unidentate ligand may be called as ambient ligand, this is a wrong statement, ठीक है। सो करेक्ट ਇਹਦਾ आंसर किया जाएगा, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ये सी कुछ MCQ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੇਸਡ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਆਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਆਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ organic compound occurring in living tissue and food in the form of starch, cellulose and sugar. The ratio of oxygen hydrogen in the carbohydrates is the same as in water, that is 2,
Ratio 1, it is a typically break down in animal body to release energy. Originally, the term carbohydrates was used to describe the compound that were that were literally carbohydrates because they had the empirical formula CH2O. Carbohydrates have the classified in the recent year on the basis of carbohydrates structures, not their formula. Such aldehyde and ketose are known as polyhydroxy. Cellulose, starch, and glycogen are among the compounds that belong to these family, and the term monosaccharides refer to a carbohydrate derivative possessing a single carbon chain. Disaccharide and trisaccharide refer to molecule containing two or three such monosaccharide units joined together through acetyl or ketyl linkage, and oligosaccharides and polysaccharides refer to a large such aggregate with a few and many monosaccharide units respectively. The current usage seems to draw the distinction between a few and many at around 10 units. So ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. First, what are carbohydrates? These are the components that is occurring in the living tissue and food in the form of starch, cellulose, and sugar. Name the functional group present in the carbohydrate. That is a functional group CH2O. That is a functional group present in carbohydrates. Next, what are the types of carbohydrates? Carbohydrates can be classified in different categories. ठीक है जी, that is a trisaccharide, monosaccharide, oligosaccharides, monosaccharides. ठीक है. Next, that is a cellulose are the example of which type of carbohydrates? That is a polysaccharides, mean because large number of units are combined together to form cellulose. And name the source of carbohydrates. Carbohydrates so majorly source are the potatoes, milk, curd. Okay, these are basic fundamental source of carbohydrates. Next, that is the the colligative properties depend upon, as we know, in the colligative property there are four colligative property, and colligative properties that is directly proportional to the number of solute particles. ठीक है, number of solute particle the dependent है, doesn't depend upon the nature of solute particle. Number of solute particle is, so first correct answer is the number of solute particle in the solution. B option is the correct answer. ठीक है, and doesn't depend upon the nature of nature dependent नहीं होते. Next, the insoluble compound in water is phenol, that is a slightly soluble. Formic acid and toluene. Formic acid show hydrogen bonding and soluble. Toluene doesn't soluble. Phenol and toluene. Next, toluene and chloroform. And correct answer is toluene and chloroform, as these contain non-polar parts, so these are non-soluble in water or insoluble in water. Next, the value of a Henry constant Kh. Partial pressure become equal to Kx into Kh. This is a Henry constant, and it is inversely proportional to the x, that is a solubility or effective of temperature. That is it will show that is a decrease with increase in temperature. Okay, correct answer is B option. Next, molality of a pure water. First 55.5 next 50.5 5.55 and 60.5, and correct answer is A option, that is 55.5 is the correct answer, as already discussed in the previous MCQ series. Next, the molality of a solution when 2.82 gram of glucose is dissolved in 30 gram of water. The molality of a solution, molality can be, so molality the formula की है, that is a number of moles of solute, that is a given mass 2.82 है, and the glucose है given us 180 है, multiplied by 1000 divided by weight of solvent, that is a 30 gram of water. So इथे solve करेंगे तो we will get the answer of molality value. ठीक है. Next, that is electrolytic cell are first spontaneous है, second non spontaneous है, third both A and P and none of the above, and electrolytic cell that are spontaneous in nature. ठीक है. Next, which of the following is secondary cell? As a primary and secondary cell, primary cell which are not rechargeable and secondary cell which are rechargeable. So first option, that is a mercury cell, this is a primary cell. Second, a dry cell, primary cell, and a lead storage cell, this is a secondary cell and a rechargeable battery. And so correct answer is a C option. Okay. Next, the metal used for the galvanization of iron. Galvanization process is the covering the some suitable iron with the suitable more electropositive electrode. For example, zinc. ठीक है, and here correct first option zinc है, second nickel है, and copper and iron है. Galvanization of iron can be taking place by
preventing the iron by electroplating with zinc metal, that is called as a galvanization process. ठीक है. So next question is the rate constant. Rate constant depend upon first temperature, second time, concentration, and none of these, and the rate constant that is depend upon the concentration terms. ठीक है. Next है the units of rate constant for second order reaction, again mole per liter power 1 minus n and second inverse. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, the units of rate constant for second order put the n value equal to 2, so 1 minus 2 minus 1 mole inverse liter second inverse. This is the first option, this is the correct answer, that is the A option is the correct answer. Next, a half life period of any of the reaction is any first order reaction, and in case of as again half life order can be written in the form of concentration by this formula. So for first order reaction n equal to 1 and T half, that is independent upon initial concentration, power 0 independent है, so that is the C option, independent upon initial concentration of reactant is the correct answer. ठीक है. Next, that is the decomposition of ammonia on the surface of tungsten is a reaction of, as in we know that the decomposition of NH3 or ammonia, that is a N2 plus 3H2 formation हो रही है. This is a example of zero order reaction, that is A option is the correct answer. Next है, a first order reaction is 75% complete, 75% complete हो रहा, 75% complete in time देता है 32. as we know for the first order reaction it is written in the form of equation, time is 32 log initial concentration divided by 75% completion है, it means 25 साढ़े कोल बच जाऊगा. सो इतों K ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करके नैक्सट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दोबारा लिखांगे ਆਪਾਂ, तो वो फिर दोबारा वैल्यू पुट कर देवांगे इत्थे, आ K ਦੀ वैल्यू इत्थे पुट कर देवांगे log 50% कंसनट्रेशन है, इट मीनस 100/50 इत्थे सोल्व करांगे तो इत्थों सानू T ਦੀ वैल्यू मिल जाएगी, K ਦੀ वैल्यू इत्थे पुट करन तो बाद. ठीक है. सो इसी ईजी मैथड जिन्ना आपां सोल्व कर पावांगे. ठीक है. सो नेक्स्ट है साडे कोल, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड. अगेन सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज द EDTA इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड. ठीक है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, दैट इज ए K पोटाशियम +1 plus X carbonyl, again neutral ligand equal to 0, and it will give the -1. This is the correct answer, oxidation number cobalt. Next, which metal is present in vitamin B12, that is a cyanocobalamin is the chemical name of vitamin B12. So here is a cobalt is present, CO, that the correct answer is B option. Next, what is the oxidation state of iron in, this is iron, as we take X plus NO -1, water, that is a neutral ligand, sulfate -2, and it will equal to +3. ठीक है. and C option is the correct answer आ जाएगा साढ़े. Next, which of the following ligand form a chelate? Chelate, it means they have the tendency to form more than one coordinate bond formation है. So let's see the option, acetate है, oxalate है, cyanide है, and amine है. In case of here, among these options, oxalate having tendency to form more than one coordinate bond, two donor atom can form two coordinate bond, so these are act as a chelating ligand. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये तो एक बार आप डिस्कस करोगे. ठीक है. ऑल द प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव different types of amino acid, and the sequence in which the amino acid are arranged in protein is called as a, so the sequence in which amino acid are arranged in a protein is called as a primary structure. ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. नेक्स्ट है प्रोटीन आर द हाई मॉलिकुलर मास कम्प्लेक्स है, हाई
mass of complex of biomolecule of amino acid है. Next, protein are high molecular mass made up of the amino acid chain. ठीक है, amino acid chain होंगे. The three dimensional structure producing the three dimensional structure that is a protein ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 dimensional structure ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ polypeptide chains ਦੇਣਗੇ. ठीक है जी, producing the polypeptide chains. ठीक है. So next, start from first question. Mole fraction of a glycerine solution in solution containing 36 gram of water and 46 gram of glycerine, and in case of glycerine, ठीक है, formula is C3H8O3 and 36 gram of water and 46 gram of glycerine, and number of moles of glycerine become equal to given mass over molar mass, that will give 0.5 mole, and in case of number of moles of water, that is a given mass over molar mass, it will give 2 mole. Mole fraction of glycerine, number of moles of one component divided by total number of moles, so it will give the value 0.2. so this is the correct answer. ठीक है जी. 0.2 C option. Next, which of the following condition is not satisfied by an ideal solution? Ideal solution which obey the Rolle's law and in which delta H mixing become equal to 0 and delta V mixing become equal to 0. ठीक है, delta H mixing is 0, delta V mixing is 0, and Rolle's law is obeyed, and formation of an azeotropic mixture which is not satisfied. All the three are satisfied, and last D option is not satisfied, so this is the correct answer, formation of an azeotropic mixture. क्योंकि azeotropic mixture की होंगे, azeotropic mixture are the mixture having the constant boiling point. ठीक है. Next, the molar elevation constant depend upon molar elevation constant है, that is Kb. ठीक है, Kb that is depend upon first option nature of solute, nature of solvent, vapor pressure of solution, and the correct option that is the nature of a solvent that depend करता. Next है rust is a mixture of, that is again the correct option FeO, FeOH thrice, second FeO, FeOH twice, next Fe2O3, FeOH thrice. This is the correct statement, that is the option C is correct answer. Next है in a dry cell, which of the following is the electrolyte? In a dry cell, potassium hydroxide है, sulfuric acid है, अमोनियम क्लोराइड है एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, एंड ड्राई सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, that is ਅਮੋਨੀਅਮ क्लोराइड ਨੂੰ ठीक है यूज़ करांगे. नेक्स्ट है इन ए फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज एज ए फ्यूल नाइट्रोजन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज एज ए फ्यूल इन ए फ्यूल सेल बिकॉज दे हैव हाई एफिशिएंसी एंड यूज इन स्पेस अपोलो प्रोग्राम्स. ठीक है. द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी defined as a rate of reaction when the each reactant concentration is reaction rate constant. Rate of reaction become equal to rate constant when concentration of reactant become unity. अगर one value हो जाएगी so correct answer is B option. ठीक है. Next है what effect does the temperature have on the half life period of a fast direction? What is the effect of a temperature? So first option है it increases, decreases, remains same, and both increase as well decrease, and the correct option that is it decreases as temperature increases and T half become decreases. ठीक है. So next is the in 30 minutes the first order reaction is 50% complete, and calculate the amount it took to complete 87.5% completion. ऑलरेडी numerical है, easily आप कर लवांगे, पिछे भी ऑलरेडी सेम टाइप डिस्कस किया. अगर फिर भी नहीं होंदा तो नैक्सट जी सीरीज़ पिछे की डिस्कस की एक MCQ सीरीज़ वो इनू सॉल्व किया देख सकते हो. नैक्सट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है फॉर जस्ट द प्रेपरेशन ऑफ बोथ अल्कली metal and halogen, that is a hydrogen possess the both properties of alkali and alkali metal as well as halogen, and correct option is B option, that is a hydrogen. Next, which of the following is not a lengthened property? First option है they are soft metal with a while silvery color, already correct statement. They tarnish rapidly by air, already correct statement. The hardness of a metal increase with the increase in atomic number, in right statement. The melting point of metal ranges from 500 to 1000 Kelvin, this is the wrong statement, and this is not a lengthened property, that is a option D.
ठीक है। नेक्स्ट है what are the lengthen final element, that is a lengthenum to deuterium Lu. So correct option is D option, deuterium. Next I determine the proper name of a K2 palladium Cl4 है, and first we calculate the mole oxidation state, that is a 2 plus x minus 4 become equal to 0 and x will become equal to 2, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट 2 आ जाएगी। सो करेक्ट नेम की हो जाएगा पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव पोटाशियम आ जाऊगा तो वाला नेगेटिव चार्ज लिगेंड पैलेडेट 2 पैलेडेट 2। सो करेक्ट ऑप्शन साढ़े को हो जाएगी, दैट इज थोड़ा सा साढ़े को करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट 2, बट इतने पोटाशियम है वाला नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द हीट ऑफ अ रिएक्शन फॉर इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस, that is the first option greater than 0, less than 0, 0 and none of the mention. So correct option is C option, that is a 0, ठीक है। heat of hydration heat of a reaction for ethyl acetate hydrolysis become equal to 0. Next, what happened to the atomic size of lanthanide as the atomic number increases? As we know in the definition of a lanthanide contraction with atomic number and ionic radii, ठीक है। With increase in atomic number, the study decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number is called lanthanide contraction, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन है साढ़े को the radius remain unchanged, second the radius first increases then decreases, radius decreases and the radius decreases, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए डी ऑप्शन है, दैट इज ए रेडियस की हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है द कोर एटम विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज मैग्नीशियम। सो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B12, कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन आयरन है, सी क्लोरोफिल है and chlorophyll contain the magnesium metal, so this is the correct option, C option. Next है people add sodium chloride to water while boiling eggs, this is due to decrease in boiling point, and second है increase in boiling point. Next, prevent the breaking of egg and make egg tasty, and correct option that is increase in boiling point, ठीक है। Next है where is reagent in which of the following, that is acidified KMnO4, aqueous KMnO4, acidified K2Cr27, alkaline KMnO4, and correct option that is a D option, alkaline KMnO4 is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट साढ़े को again paragraph based question. The protein are large complex molecule that are maybe critical role in our body, and they do most of the work in the cell and required for the structure, the function and the regulation of the body tissue and organ. Protein are made up of the hundreds of thousands of smaller units are called amino acid, which are attached to one another in a long chain. There are 20 different type of amino acid that can be combined to make a protein, and sequence of amino acid determine each protein unique three-dimensional structure and its specific function. So first question है देखो what are protein polymer? Protein are the large complex molecule, ठीक है। Are protein polymers? Yes, because this is a large complex molecule, ठीक है। Second है give two example of denaturation of protein. Denaturation of protein, that is a protein upon breakdown will give the amino acid. सो बेसिकली जे दो एग्जाम्पल की गल करिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन साढ़े हेयर ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ हेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਲੀ हेयर ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ टाइप ਦੇ करना चाहते हैं, केमिकल एजेंट कोई भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड सैकेंड एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਐਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। तो वो ये दो एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दिया। नेक्स्ट है डू यू मीन बाय द
Primary structure of protein, primary structure that is a linear structure है, that is different units combined together through a to form a single chain structure. ठीक है. What are essential amino acid? Essential amino acid which are need to our body and cannot be produced in our body through the diet. ठीक है. These are essential amino acid and total 20 amino acid, 10 are essential amino acid and 10 are non essential amino acid. 10 ਜਿਹੜੇ amino acid ਆ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ diet through ਦੇ, ਤਾਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ essential, ਤੇ ਜਿਹੜੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ diet through ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ that are non essential amino acid. ਠੀਕ ਹੈ. By which linkage amino acid are linked through the glycosidic linkage, that is CONH. This is a glycosidic linkage हो जाती है. ठीक है. So next, that is the true false question. First है carboxylic acid are weaker acid than alcohol. This is a wrong statement. This is a false, because carboxylic acid are stronger acid. Second है reaction is feasible if EMF of a cell is positive. Reaction is feasible. So overall delta G will become equal to negative value. So this is a also true statement. Next, geometrical isomer is not possible for tetrahedral geometry. That's a true statement. Next, low spin tetrahedral complexes are stable. This is also a true statement. Next, a hypo solution used in photography because the strong complexing is in. This is also a true statement. ठीक है जी. So next है that is the mole fraction of methanol in 4.5 molar aqueous solution is, it can be calculated as here number of moles of methanol in 1000 gram of water, that is a 4.5, and number of moles of water can be calculated by, that is a 1000 by 18, that is a 55.5, and mole fraction of methanol, number of moles of methanol divided by total number of moles. ठीक है. And it will give the value 0.075. This is the correct answer. ठीक है. Next है the osmotic pressure of 0.2 molar solution. As we know, osmotic pressure pi equal to CRT. Put the value for concentration R gas constant and T temperature, we will get the answer. Next है constant boiling mixture are also called as constant boiling mixture, that is called as azeotrophs. ठीक है जी. If molarity of a dilute solution is a double the value of molar depression constant, as we know relationship delta TF equal to KF into M molality. If molality of the solution is double, if M is double, then value of molar depletion constant KF, that is will become equal to delta TF divided by 2 into M. This is will value become half हो जाएगी. So correct answer is A option. Next, which of the following is unit is useful for relating the concentration of solution with the vapor pressure? Which of the following is unit is useful? That is the first mole fraction, second parts per million, mass percentage and molality. So correct option is A, that is a mole fraction. ठीक है. When lead storage battery is discharged, first sulfur dioxide is evolved, lead sulfate is consumed, third lead is formed, next sulfuric acid is consumed, and when the correct answer is D option, sulfuric acid is consumed when lead storage battery is discharged. ठीक है. The difference between the electrode potential when two electrodes having no current is drawn through the cell, that is called as a EMF cell EMF. Correct answer is a B option, cell EMF. ठीक है. And in infinite solution again Colrush law ਦਾ numerical है, that is a barium chloride ਦੇ ਉੱਤੇ different molar conductivity value given है. So lambda naught BaCl2 can be calculated by lambda naught, that is a barium 2 positive plus Cl negative, and this is twice. So put the value here, barium 127.32 plus 76.34 multiple by 2 and it will give correct answer. ठीक है. So इतना आप easily आप calculate कर पाएंगे. So next है the ionic conductivity of H positive and OH negative ion are given,
एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वाटर सिमिलरली आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाटर की भी आप इतों कैलकुलेट कर पावे। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है। ठीक है, इतना आप ईजिली ऐड कर पावे, दोनों ऐड करके दोनों का सम अप करके दैट विल गिव द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है Arrhenius equation is represented by first option k is equal to a e the power e a over rt, second k is equal to a e the power minus e a over rt, third half lifetime relationship, and none of these, and correct option that is a B option. This is also called as Arrhenius equation. K is equal to a Arrhenius factor, rate constant है, E exponential factor है, E a that is the activation energy है, R is gas constant, T is temperature। ठीक है, नेक्स्ट है when initial concentration of reactant is double and half life period of a zero order reaction, in case of T half that is directly proportional to A 1 minus N, and zero order reaction है 0 1 and is directly proportional to A, concentration हो जाएगी T half, if the initial concentration is double it means double हो जाएगी, तो T half B की हो जाएगी साढ़े को डबल वैल्यू हो जाएगी, इज डबल, एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, सो एक ईजिली मैथड है कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल इस टाइप की। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ जीरो डायरेक्शन, ऑलरेडी आप कैलकुलेट की है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डिफरेंट मैथड। द रेट ऑफ रोल ऑफ कैटलिस्ट टू कैटलिस्ट का रोल की है एंड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करनगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करनगे। नेक्स्ट है विच मैटल इज पोजेस्ड इन विटामिन B12। ठीक है, B12 विटामिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, साइनोकोबालामिन, दैट इज ए कोबालामिन, कोबाल्ट होएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, केमिकल नेम विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट EDTA इज ए, दिस इज ए ऑलरेडी आप डिस्कस किया काफ़ी टाइम क्वेश्चन, दिस इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ ए कंप्लेक्स पोटाशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0, पोटाशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0, एंड द करेक्ट ऑप्शन दैट इज जिद आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं, 0 के आ रही है, सो देख रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन, दिस इज 3 प्लस x प्लस 6 इंटू -1, इट विल गिव -3 इक्वल टू +3, दैट इज ए बी ऑप्शन, +3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन इन द निकल Cl4, दैट इज ऑल्सो nickel Cl4 nickel 2 positive, that is a 3D 8 4s weakened and 4p, and this is a nickel 2 positive ion। ठीक है, and here that is a S and P orbital are remain weakened, as we know Cl is a weak field ligand, so it's so high spin complex, so formation of sp3 hybridization। ठीक है जी, ये वाले की है लो हाई स्पिन कंप्लैक्स होने करके इतने जो इलैक्ट्रॉन है एज इट इज़ रह जाएंगे, तो ये वाला की शो करेगा हाई स्पिन कंप्लैक्स के जो वेकेंट है एस ते पी ऑर्बिटल दैट विल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है जी, दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साढ़े को अगेन पैराग्राफ बेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द चार्ज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, and the charge carried by 1 mole of electron is approximately 96500 coulomb, that is a also a correct statement। True statement है the resistivity of a conductor is independent upon the dimension of a conductor, as we know in case of resistivity R equal to rho L over A, that is a rho that is also a depend upon R A over L, that is a dimension that depend करेगी, so this is a dependent term, so this is a false statement। Next, the ion which carry the current through the solution are called as a charge carriers, this is also true statement। Next, K4FeCN6, this is a double salt, so this is a wrong statement। Next, copper 2 is diamagnetic, copper 1 is paramagnetic, in case of copper that is a 3D 10 4s1, so as copper 2 is 3D 9
3d9 that is a paramagnetic, and copper 1 that is a diamagnetic, so this is also a false statement. Okay. Next है 14 page number. Next question, multiple choice question है again. Which of the following is a colligative property? First, that is elevation in freezing point. Second, elevation in boiling point, depression in freezing point, and all of the above. And elevation in freezing point is not a colligative property, so elevation in boiling point is a colligative property. So correct option is B option. Next, isotonic solution having the same osmotic pressure, same the concentration value C1 equal to C2. So correct option is D option, same osmotic pressure. Next, the mole fraction of a gas in a solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution. This is a statement of Rolle's law. ठीक है, partial pressure is directly proportional to the mole fraction. ठीक है. Next है 0.6 gram of urea dissolved in 100 gram of water. What will be the boiling point? So it is using directly boiling point delta TB formation example देना delta TB equal to KB into M देना solve कर लांगे बाद में TB calculate कर लांगे already अपन डिस्कस पहले भी किया. Next is the calculate the molarity of that is 14% of sulfuric acid by weight by density is given already अपन डिस्कस किया सी पहले भी. Next an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell and when first option है साढ़े को E cell equal to 0, second E cell greater than E external, third है E external greater than E cell, and none of these, and correct option is E external is greater than E cell. Next है if the conductivity and conductance of a solution is same then cell constant will become equal to. If conductivity and conductance will become equal to, as we know in case of relationship R equal to rho L over A, if taking the reciprocal 1 over A equal to 1 over rho, and that is A over L. ठीक है, so L over A अगर A भी वैल्यू 1 है, A भी 1 है, टोटल L over A also become equal to 1, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी की हो जाएगी साढ़े को 1 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड solution is 1.06 10⁻², and its molar conductivity can be calculated molar conductivity K into 1000 divided by the concentration. ठीक है, concentration or molarity, put the value of K here and molarity molar concentration 0.1 and solve it. ठीक है. Next E naught cell and delta G that are related with each other. Delta G is equal to minus NF E naught cell. ठीक है, this is the correct statement. Next, so correct option is delta G naught equal to minus NF E naught cell. ठीक है. Next है zero order reaction is one which whose rate is independent upon first volume of reaction, second concentration of reactant, next temperature and pressure of light, and the correct answer is concentration of reactant. ठीक है. Next question है the rate constant for a reaction has same unit as the rate of a reaction. What is the order of a reaction? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ K equal to mole per liter 1 minus n, and second inverse as we know first order reaction n value 1 and this is a second inverse. ठीक है, second inverse unit हो जाएंगे. Next question is the number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction that is called as, this is a basic definition of a molecularity, and correct option is A option. Next, ethylene diamine is an example of, this is already a CH2 NS2
NH2, this is the ethylene diamine, both are nitrogen having the tendency to donate electron pair and act as a bidentate ligand. ठीक है. Next question is, what is the oxidation state of this complex? 3 plus X plus cyanide negative charge ligand minus 6 will become equal to 0, and solve the X value, that is a plus 3 is the correct answer. Next, which of the following ligand is a strong field ligand? That is a CO is a strong field ligand. ठीक है. Carbonyl. How many ions are produced from CONH3 6 Cl3 3 Cl plus 1? This is a complex. Total 4 is the ions are production. ठीक है. Next, this is again paragraph based questions. ठीक है. And last one, this is the unit of rate constant for first order reaction. Again second inverse already discuss किया था. ठीक है. ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सारे डिस्कस हो चुके हैं. Ethylene diamine, that is a bidentate ligand. Oxidation state of this is a 3 plus X minus 6, that is a plus 3 oxidation state. Which of the strong field ligand? That is a carbonyl. How many ions are produced? That is a 4. Coordination number of cobalt in the complex is coordination number. Ethene is a neutral ligand, that is a X. As in case of ethylene diamine, CH2, CH2, NS2 and NS2, there is 2 nitrogen atom that will act as bidentate ligand, 2 and total 3 है, 3 to 6, and coordination number कितना हो जाएगा cobalt का? That is a 6 is the correct answer. इसी साढ़े most important expected ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MCQ क्वेश्चन है. मैक्सिमम ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, दस सकते हो. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी होएगी तो सो जिन्ना वध तो वध हो सकता है इस चैनल में वध तो वध लाइक शेयर सबसक्राइब करना. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. नैक्सट वीडियो जी हैगी आपां वो देखांगे नूमैरिकल बेस्ड वीडियो जी बहुत जल्दी थोड़े कोल आएगी. अगेन थैंक यू. ऑल द बेस्ट.